This conference will now be recorded. Very good evening, friends. This is Jyoti Budhia. Am I audible to everyone? Hello. Good evening, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. I request you all to keep your mic on mute and no webcam should be on. That's a small request from my side. Otherwise, वो data बहुत खाते हैं. अच्छा, यहाँ पे मिस्टर रोहन करके हैं. Can you please identify your full name, sir? On screen, it is showing as Rohan. Can you please identify your full name? Mr. Rohan. Mr. Rohan. When did you register, Mr. Rohan Suryavanshi? Mr. Rohan Suryavanshi, when did you register? By what name did you register? ओम प्रकाश मंत्री मैडम हमारी तरफ से वो अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ वो आप मुझे नाम नहीं मालूम था ना उनका. आपने बोला था कि आपका स्टाफ है. हाँ 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 आपने बोला था आपका स्टाफ है, लेकिन मुझे नाम नहीं मालूम था. कोई बात नहीं. हाँ हाँ हाँ. So we start, friends. Anybody uncomfortable with English or anybody uncomfortable with English? No one. Okay. Anyone uncomfortable? हिंदी जिसको नहीं आती हो? ऐसा कोई जिसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती हो? चलो ठीक है. So I will be using a mix of Hindi and English, not pure English, क्योंकि अच्छा रोहन जी आपको थोड़ी हिंदी चाहिए. ओके. और कोई है जिसको मतलब हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती हो, ऐसा कोई है? ऐसा कोई है जिसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती हो? Just a second. Okay. So assuming, अच्छा बेसिकली मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दूं. मेरा नाम ज्योति बुधिया है और I'm in this market from more than 35 years now. Third generation. You can say market is my lifeline. Market is in my blood. Not blood, I'll say it is in my DNA now.
I cannot live without market and market also cannot live without me. हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं. That's all I can say. And welcome to futures and options. I'll simplify all the futures and options for you. I will not do very detailed futures, but थोड़ा बहुत futures में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग नए हैं जो सिर्फ आज तक कैश में ही काम किए हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कभी काम नहीं किए. My voice not coming? Any problem? Loud and clear, ma'am. Very clear. Very clear. Thank you so much. Mr. Pawan, please check your mic. Everyone can hear. Yeah. Please keep your mic on mute mode all. If you all have questions, I'll ask you. Don't worry. मैं बिना आप लोग को समझाए आगे नहीं जाऊंगी, चिंता बिल्कुल मत करो. मैं फ्यूचर्स के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट जो लोग ने फर्स्ट टाइम इस ऑप्शन फ्यूचर एफएनओ की दुनिया में कदम रखा है, जो आज तक सिर्फ कैश करते आए हैं, जस्ट उनको एक बार रिव्यू करा देते हैं फटाफट कि फ्यूचर्स जो होता है वो बहुत रिस्की प्रोडक्ट होता है. क्यों? बिकॉज वी आर ट्रेडिंग इन लॉट्स. वी आर ट्रेडिंग इन लॉट्स और one lot is approximately nowadays it should be of 5 lakhs, but maximum lots are of around 8 to 10 lakhs. अभी कुछ lots की साइज कम हुई है, बट काम बहुत रिस्की है एंड इसलिए फ्यूचर्स को रिस्की बोला जाता है. कैश में हमारे पास जितना पैसा है उतना हम खरीदते हैं, बट इन फ्यूचर्स we pay margin and trade. So we are trading 8 to 10 lakhs by paying only approximate 10%. और वो भी आप कोलैटरल अगर आपके पास है शेयर्स डीमैट अकाउंट में, तो वो देके भी आप ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स बाय कर सकते हो या शॉर्ट कर सकते हो. खाली आपको जो डेली का रिस्क आएगा वो आएगा M2M. M2M यानी मार्क टू मार्केट. व्हाट इज दैट? मतलब आपने आज से 1100 में बाय किया 1 लॉट, इवनिंग की क्लोजिंग, आज इवनिंग की क्लोजिंग 1075 आई है, तो दैट इज क्लोजिंग टुडे. तो 25 रुपीज का लॉस हुआ इनटू लॉट साइज से 500, तो करीब 12,500 का आपका 12,500 का M2M आया है. दैट इज व्हेन आई पुट इट इन ब्रैकेट्स मींस इट इज अ notional loss. It's not a loss, it is a notional loss because you have not squared up the trade. But what has happened is you are trying to keep the trade, so everyday loss and profit is calculated and you have to pay that. Don't worry, if there is a credit you receive that, but वो हमको पता नहीं चलता. The reason is why we don't come to know is a very simple thing. We don't come to know is because we book our profits with a small profits. We carry over the position only when we are in loss. Profits we square off fast. Loss we carry forward. Profit हो तो we say don't carry the position home. कल की कल देखेंगे, आज का profit book करके will go home. And for losses we say ठीक है, let's wait for tomorrow, maybe we will get our price tomorrow. So ठीक है, आज छोड़ के जाते हैं, कल देखेंगे. So that is why I say M2M is generally in loss, very less in profits.
Suppose next day the price closes around 1045, then again 30 rupees ka loss. Why 30? Because 25 you paid yesterday. So 30 into 500, it is 15,000. Now what the problem comes? Why I call this a very risky product? I call this as a very risky product because every day जब M2M debit आता है, I have to pay it before market starts in the morning or latest by 9:30 or so. Otherwise, broker has the right to square off my trade. One day I will make the payment, 2 days I will make the payment, 3 days I'll make the payment, 4 days one fine day I'll say nahi bhai bahut ho gaya and I cannot make the payment. Broker cuts the position, we are in a mess. These things cause a very very big tension, and I'm sure जो futures में काम करते होंगे यहाँ पे, they must be facing this type of problems because simple reason we don't use stop loss. मुझे बोलने की थोड़ी ज्यादा आदत है, जो आप लोग जानते हो, लेडीज लोगों को बोलने की आदत है, एक बार बोलना शुरू कर दिया तो चुप होने का नाम नहीं लेती हैं. That is good for you by the way. लेकिन ज्ञान भी ज्यादा देती है बिना मांगे. तो and leverage products, futures are generally leverage products. Why leverage products? मतलब आप सिर्फ 10% दे रहे हो, 5 लाख का या से 10 लाख का लॉट खरीदा, आपने लाख रुपए दिया या 50,000 दिया. So 50,000 or 1 lakh, you have bought 5 to 10 lakh worth shares. So you have leveraged, and then every day you have to pay mark to market. Why you have to pay mark to market? The reason is this you cannot pay in cash, you have to give it in this you have to pay in cash, you cannot give shares against this. आपका जो everyday loss होता है, it is a risk to the broker and stock exchange. That is why every day your loss is taken from you and given to stock exchange. So futures are leverage products, and that is why मैंने futures में लोगों को totally finish होते हुए देखा है. इसमें कोई आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अपने आप को बहादुर प्रूव करने की जरूरत नहीं है. डोंट से यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, यू ऑल आर very good in futures. I don't deny everybody must be having their own trading strategy, whatever it is, but trade with stop loss and be very careful with futures because they are leverage products. देखो ऐसा है, what I say, when we want to buy something, we don't prefer to buy something on loan, right? That is what we are doing over here. We are buying a lot, we are indirectly taking a loan. That is the biggest reason I want to hedge and trade. I don't want to trade without hedging. I will teach you all the way to hedge also, don't worry. I'll be covering that tomorrow because today I will be just taking the basics of futures and little bit on options. So that is what is futures. Secondly, one more important thing is, suppose spot is 1100, then futures price generally is 1106 or 7. You will see some difference between spot and futures. Why? Since you are not paying full money, it is assumed virtually that someone else is paying the money on your behalf. ऐसा माना जाता है virtually. So if somebody else is making the payment on your behalf, then what you have to do? You have to pay the interest.
So that interest, जब मैं रिंग में जाती थी, I used to go in the ring in 1986. So जब मैं रिंग में जाती थी, that time it was known as बदला system. Means what? Those who didn't have money, they used to carry over the position or roll over the position, and interest was charged to them. That was called as badla during the ring times. That badla today is in the form of cost of carry. So cost of carry is in English. In Hindi, it is called as badla. Hindi, Gujarati, whatever you say, it's called as badla. Because maximum Gujaratis were there, so they used to say it badla. So the 6 rupees is generally a cost of carry. Sometimes I may see this 1100 and 1106. Sometimes I may see 1106 and 1100. Means this is spot, this is futures. You must have also noted in the shares like PVR, HDFC, Pidilite. Maximum times you must have noticed the price is running, spot is running this and future is discounted. So if there is no dividend and future is discounted, it is called as ulta badla. Why? See, there can be two reasons. One is because of dividend. If there is dividend, then dividend is not given in futures, and hence the rate price is encashed in the futures itself, and that is why futures are discounted. Another important thing, we cannot do short selling in cash. We can do, ऐसा नहीं we cannot do, but the thing is by 3,315 it is auto square off and we cannot carry it forward for the next day unless you have a shares. अगर आपके पास शेयर्स है तो आप अपने शॉर्ट्स को सेकेंड डे के लिए कैरी कर सकते हो, लेकिन नहीं है तो 3,315 पे ऑटो स्क्वायर ऑफ में वो खत्म हो जाएगा. You can't even wait for 330. And many times I've seen that these price come either the next day or after 315. Then what? We are in a big mess. So that is why people try to shorten futures. And when they shorten futures, but they and nobody are interested in buying, or few people are interested in buying, but more are interested in selling in futures, then in that case, your futures will be at a discounted price. This is futures which is at discounted. It was also known as ulta badla. What happens, badla जो है, the difference between cost of carry on day one is the highest. अभी तो कोई खास इतना फर्क नहीं रहता है, but still theoretically day one पे highest होता है, because 30 दिन का ब्याज होता है या 25 दिन का ब्याज होता है जितने का सेटलमेंट एक्सपायरी है, तो उतना वो ब्याज होता है. एंड स्लोली जैसे जैसे दिन कम होते जाते हैं, वो ब्याज जो पीरियड है, सॉरी ब्याज तो कम नहीं होता, पीरियड है, तो अब 20 दिन बचे हैं तो आप 20 डेज का ही इंटरेस्ट दोगे या कॉस्ट ऑफ कैरी दोगे. अगर 10 दिन बचे हैं तो आप 10 दिन का ही इंटरेस्ट दोगे या कॉस्ट ऑफ कैरी कॉस्ट ऑफ कैरी भरोगे. एंड इफ लास्ट ओनली 1 डे बचा है तो आप सिर्फ आज का ब्याज दोगे, नहीं दोगे जो भी है, but you won't give it for 1 month. That is why the spot and futures, they get converged on, this is futures, this is spot. तो सपोज ये डिफरेंस आज डे 1 का है, कम होते 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 लास्ट डे पे कन्वर्ज हो जाते हैं, whether it is उल्टा बदला और सीधा बदला, they get converged. Only one more biggest thing is,
In cash, if I want, I can trade in one share also. But when I'm trading in futures, I have to trade minimum one lot. One lot is defined by the stock exchange. तो मुझे फ्यूचर्स में उतना ट्रेड करना ही पड़ेगा, मैं उससे कम नहीं कर सकती. मैं चाहूं कि मैं अगर 1000 का लॉट है और मैं चाहूं कि मैं 500 शेयर खरीद लूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. आई हैव टू बाय मिनिमम 1000 ओनली, or else I have to buy in cash. Yes, my friends, यहाँ तक किसी के पास कोई questions है? ऐसे ही wait 1 second ना, आप लोग मत बोलना, मैं पूछती हूँ. अंकित जी, I'll go quickly. अंकित जी, you have any question? Anuradha madam? Anuradha madam, do you have any question? No, ma'am. Thank you. Mr. Gaurav? No, ma'am. Mr. Heth? Mr. Kunal? Mr. Kunal? Okay. Mr. Mahesh? Mr. Mahesh Mistry? Mr. Parimal Gandhi? मैडम, जो शुरुआत का जो 5 मिनट का वो कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी, आप वो सुन लेना. ठीक है जी. थैंक यू. टेंशन मत लो, छूट गया उसका टेंशन मत लो. ओके. जो नहीं समझ में आया वो पूछो. ठीक है, ठीक है. और आप रिकॉर्डिंग देखने के बाद अगर डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना. जी जी. अगर मुझे लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे सबके बीच में बताना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट सेशन में रिपीट कर दूंगी. जी. I'll try to send you all the recording by tomorrow afternoon. ओके ओके ओके. बाकी जो सिखा रही हूँ परफेक्ट है? जी 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 जी. पवन जी? पवन जी? Mr. Prakash? Any doubts? Pranjali? Yeah, ma'am, I just didn't understand the last part of futures and spots being converged. I just didn't understand that one. Okay. Month of beginning, you are paying, say, for example, 1% interest. Right? So Okay. 1% Yeah. interest, let us take very simple case. 1% interest on 3,000 rupees is 30 rupees. Yeah. If the price is 3,000. So on day one, you are paying 30 rupees as interest. Let Yeah. us assume this way. On 1 day is over, you are paying 29 rupees. Yeah. 10 days are over, you pay 20 rupees as interest. Yeah, ma'am. Yeah? Yeah, See, ma'am. interest due date is expiry. Okay. So now you are not taking interest. Here the system is not for 1 month, means what you are buying today will be from today 1 month. ऐसा नहीं होता है. It is only up to expiry. Okay, ma'am. Expiries happen on last Thursday of every month. Okay, ma'am. So now only 10 days are remaining for expiry. So you'll be paying interest only for 10 days. Yeah. If only 1 day is remaining, then last day on Thursday morning, you'll be paying only for that day. At Thursday evening 3:30, all are finished. Yeah. So no interest. That is how. So on day one, it is 30 rupees, 29, 28, say 20, say 10, 5, 4, 2. Okay, ma'am. Got it? Yes, ma'am. Okay. Any other confusion, Pranjali? No, ma'am. Okay. Thank Mr. Raj?
Mr. Rai Rajpal, A small query. Ma'am, हाँ in बोलिए case ना of सर. Ulta Badla, see the spot price is more and future price is less. Does this mean that more people are doing short? हाँ, अगर डिविडेंड नहीं है तो अच्छा, अगर डिविडेंड जीरो मतलब केस नहीं है डिविडेंड का फिर शॉर्ट है. अगर हाँ, डिविडेंड वाला केस आ जाता है तो द सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज माइनस फ्रॉम दैट. यस यस जनरली वो होता है. और डिविडेंड नहीं है तो क्योंकि मतलब उस 2-4 दिन के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ना? नहीं डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद जनरली मैंने नेगेटिव होते हुए देखा है. एडवांस में नेगेटिव होते हुए नहीं देखा है. ओके, मतलब वो तो फिर सिंगल डे का ऐसा सीन होगा. नहीं क्यों सिंगल डे? जब तक डिविडेंड एक्स डिविडेंड नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा ना सर, क्योंकि ओके, फ्यूचर्स में तो मतलब डिविडेंड आता नहीं है ना. अच्छा, मतलब लेट्स से कंपनी डिविडेंड साल में 4 बार देती है क्वार्टरली, तो नहीं 10 मुझे रुपए. उससे नहीं है. से एक मिनट, अगर एक्स डिविडेंड 15 तारीख तक है, से फॉर एग्जांपल लेट अस टेक नाउ फॉर करंट ईयर डे, टुडे इज 18th, 21 तारीख को एक्स डिविडेंड है, ओके मैम. तो 21 तक वो डिस्काउंटेड रहेगा, 21 को एट पार आ जाएगा. ओके, तो मतलब 21 तक एक्स डिविडेंड है, मतलब मैम एक बार क्लियर करेंगे? 21 को एक्स डिविडेंड है, कैश मतलब स्पॉट में उस दिन जो डिविडेंड आएगा, डिक्लेयर होगा. मतलब आपके कैश की जो प्राइस होती है, अगर आपको पता होगा कि जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर मतलब एक्स डिविडेंड हो जाता है, उस दिन स्पॉट का प्राइस कम हो जाता है यस. बाय डिविडेंड वैल्यू. यस मैम. हाँ, तो वो हो गया ना एक्स डिविडेंड डेट. उस दिन ओके, आपका स्पॉट और कैश एट पार आ जाएंगे. ठीक है मैम, समझ गया. हाँ, तब तक वो मतलब अगर डिस्काउंटेड है तो फिर कुछ ओके, मतलब डिविडेंड के कारण. अगर डिविडेंड नहीं है फिर डिस्काउंटेड है तो कोई और रीजन भी हो, शॉर्ट सेलिंग भी हो सकता है. ओके, थैंक यू मैंने मैम. ये चीज आप नजर रखेंगे ना, तो पीवीआर है, पिडिलाइट है, फिर आपके क्या नाम चोला है, एचडीएफसी बैंक है, इनमें आपको बहुत बार दिखता रहता है. ओके मैम, या थैंक यू मैम. रेखा मैडम, एनी डाउट्स? रेखा मैडम, एनी डाउट? खुराना जी, कोई डाउट्स? क्लियर मैम. रोहन क्लियर. उन्होंने तो व्हाट्सएप पे इसमें दे ही दिया था. ठीक है. रोहन जी, आपको समझ में तो आ रहा है ना? मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश यूज करती हूँ तो, नहीं तो दूसरे लोग अटक जाएंगे. हाँ मैम. हाँ, ओके. संजय सर, क्लियर मैम, क्लियर. क्लियर. संतोष, संतोष क्लियर मैम. ओके. चलो, सो Query, you didn't ask my बेसिकली name. मैम मेरे को एक क्वेरी है. हाँ बोलिए सर, बोलिए. See, you say there's a सॉरी आई difference of. मिस्ड इट. सॉरी Oh, no सॉरी आई problem. मिस्ड. It's okay. You say there's a difference of 6 rupees. People are doing it. When I see Roughly. the difference, can I come in and take advantage of the 6 rupees? Because anyway, it's going to converge, right? How do I play that? No, you can't play unless, see, you can generally what people do is they buy in cash and sell in futures. Okay, they buy in cash and sell in future. I can do the ulta, na? Or Why? something wherever I can play around to make use of Yeah, this. Because anyway, it's going to convert somewhere, right? suppose, yeah, if it is a ulta badla also, you can sell in cash and buy in futures, but you should have the shares in cash. So there's no way you can get hold of this mispricing. No, 1 second. You can do the hold. That is not a problem, sir, Mr. Vikram. There's no problem at all. See, if it is 1100 and 1106, so this is spot, this is futures. You can buy here
and sell here. You can do this. Okay. But is it feasible to you? No, here in this case, 6 rupees is small, agree. But there are some times, you get big difference. That time we can If you play, no? see, you can play. Why not? There's no harm if your interest cost, your brokerage cost, everything is getting covered, and then also you're earning. Of course, you should do it. Okay, but there are chances when we get such opportunities. Yeah, but algos are running, na? They are running so fast that they won't allow you. Okay. Thank you, ma'am. See, as an individual, I have to pay brokerage. And if you're with a broker, then you might not have to pay a brokerage, but taxes and all are there. So you can take that advantage and you can sort the mispricing and do that arbitrage. That's known as arbitrage. And suppose if, for example, let us take it this way, that this is 1106 and this is 1100. This is spot, this is futures. So you can do one thing, you can sell over here and buy over here. Take the mispricing ka benefit. But this is spot, you should have the shares with you. Yeah, that's true. Two things will go away. One is shares you will have to leave, delivery brokerage, delivery STT, and plus if you have any benefits of long term, you might have to leave that. Or we can borrow it from SLBM also, ma'am. सर SLBM से आप लेके इतना अगर बड़ा डिफरेंस है और आपको SLBM का कॉस्ट परवड़ता है तो ले ना. Yeah. Thank you, Mr. Kunal. Yeah. So SLBM का कॉस्ट आपको परवड़ना चाहिए. See, arbitrage is the whole matter of costing. This we called as arbitrage. यहाँ पे बिल्कुल जो कॉस्ट अगर आप समझ सकते हो, in a benefit of cost, you borrow from SLBM, you put your shares in pledge and take share money from the bank, whatever you want you can do, but only the thing is it should be cost effective to you and you should not be in a loss. Then so it is okay. Okay, noted, ma'am. Continue, ma'am. Thank you. Thank you. Ha, Saurav sir, do you have any question? Savita madam? यस मैम, आपने कहा कि ये पीडीलाइट जैसे स्टॉक्स में ये डिफरेंस होता है, लेकिन अगर निफ्टी में होता है, इन केस अभी कुछ निफ्टी में भी होता है. हाँ, निफ्टी में भी बहुत बार होता है. यस, लेकिन तो निफ्टी में आप कहाँ से शेयर्स लेंगे जी? निफ्टी में आप कहाँ से शेयर्स खरीदेंगे स्पॉट में? निफ्टी आप स्पॉट में सिर्फ 20 बाय कर सकते हो, निफ्टी 20. अदरवाइज यू कैन नॉट बाय. निफ्टी ETF बाय कर सकते हो, निफ्टी और स्पॉट में और तो कुछ ले नहीं सकते. तो आप उसका बेनिफिट क्या करता है ऐसा पूछ रही हूँ मैं, जैसे निफ्टी स्पॉट और इसमें फ्यूचर्स में आपके पास स्पॉट में लेने के लिए कोई चीज होनी चाहिए ना. नहीं, लेने के लिए मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये मैं जस्ट डिफरेंस जो है स्पॉट. डिफरेंस क्यों आता है? वो तो वही है ना कि भाई डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है ना मैडम. ओके. आप कितनी एक दो बार तो मैंने ऐसा देखा था कि 75 रुपीज तक का डिस्काउंट था निफ्टी में, और 2 दिन के अंदर अंदर मार्केट कैचअप कर गया, ऊपर चला गया, और निफ्टी और वो दोनों पार पे आ गए, स्पॉट एंड फ्यूचर्स. बिल्कुल. हाँ. ओके, गॉट इट मैम. या, थैंक यू. डॉक्टर वीरेंद्र, एनी डाउट्स? No. Caller No, madam. 1, please. Okay, doctor. Caller 1, please identify yourself. Caller 1. Caller 1. Caller 1, please identify yourself.
I hope now nobody has a doubt. I'll move ahead. You have any doubt, Akash? So basically, I have No, shown ma'am, you no all doubt. I was just checking, ma'am. Okay. Now, when we say this is the payoff, so this is the risk and reward when we talk of payoff. Like say this is 1100. I buy the shares at 1100. Up, I will make profit. Unlimited profit. But as and how market falls, I will make losses. Unlimited losses. Now, if you all remember, you all must have seen this graph in your school college days. This was positive side, this was negative side. That is why the pointer which comes over here is negative, and this is zero line. Why the line comes to zero? Because the price can fall only till 1100. That is why your max loss is only up to 0 if you have purchased. इसीलिए कहा जाता है कि जब हम परचेज करते हैं, बचपन से सिखाया गया है कि जब हम परचेज करते हैं तो हमारा मैक्सिमम लॉस उतना ही होता है जितना हमने पे किया है. लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा है कि परचेज करने के बाद जब प्राइस गिरता है तो ज्यादा डर लगता है बजाय के सेल करके जब मार्केट ऊपर जाता है तो. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. प्राइस ऊपर जाएगा, आपने शॉर्ट किया है, प्राइस ऊपर जाएगा तो भी डर लगता है. प्राइस नीचे जाएगा, अगर आपने बाय कर रखा है तो भी डर लगता है. सबकी एक ही कहानी है. So it's not that. Only the thing is you have to be very careful while trading. That's all. Now coming to this. This is, I have say shorted the futures at 300 rupees. और चलो एक अच्छा सा एग्जांपल जो इस बार हुआ था वो लेते हैं. I have shorted Adani at 450 rupees. अभी अदानी जितना, अदानी एंटरप्राइजेस जितना ऊपर जाएगा उतना क्या होगा? What is this side? This side is, I'm sorry. I have shorted Adani और जितना ये नीचे जाएगा 440, 430, 400, जितना नीचे जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट आएगा till it becomes 0. और जितना ऊपर जाएगा से 460, 500, 600, जितना ऊपर जाएगा लॉस बढ़ते ही जाएगा. So ultimately my profit is limited only till it goes to 0, theoretically. And loss unlimited. शॉर्ट करने में यही होता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस थियोरेटिकली इट इज सेड बोथ आर अनलिमिटेड. माय बैड, प्लीज फॉरगिव मी. मार्केट में दो टाइप के रिस्क हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा. एक है सिस्टमैटिक रिस्क और एक है अनसिस्टमैटिक रिस्क. ये सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक आपने बहुत बार सुना होगा, बट यू शुड नो व्हाट इज सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक. अनसिस्टमैटिक, पहले मैं अनसिस्टमैटिक बताऊंगी. अनसिस्टमैटिक इज कंपनी स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक. कि कोई सेक्टर में अच्छी न्यूज आई, खराब न्यूज आई, बेस्ड ऑन दैट वी कैन कंट्रोल इट बाय diversifying our portfolio. But systematic risk is the biggest risk. That is global scenarios, markets and all that thing.
I'll say this pandemic, when this pandemic started 1 year ago, it was a very bad systematic risk. The whole market fell down. वो inflation आता है, deficits आते हैं, interest rates बढ़ते हैं. So all this hamper directly the overall whole market. और जब whole market में risk आता है, that is called as systematic risk. This systematic risk cannot be diversified, but I prefer to hedge them. And once I hedge them, then I'm bit safe. So you can, I'll do a small exercise on hedge. At last, once I finish with this, I will show you hedging is a beautiful part. And you can control. So this is the spot plus cost of carry, means it's a type of cost of carry, which is financing cost is known as cost of carry minus dividends is your, और margin का मैंने आपको बताया था कैश और कोलैटरल. इंडेक्स फ्यूचर्स में मेरे पास निफ्टी बैंक निफ्टी है और अभी रिसेंटली निफ्टी फाइनेंशियल फ्यूचर्स भी स्टार्ट हुए हैं. दैट हैज स्टार्टेड रिसेंटली. Generally, if we trade futures without hedge, it is treated as speculation. तेजी लगी, बाय कर लिया, मंदी लगी, शॉर्ट कर दिया with stop loss. If you do stop loss use करोगे तो अच्छा है, नहीं तो पूरा पूरा speculation. Yeah, I'm starting with options. Still here, anybody has any question can ask me. हेलो मैडम, राज एक क्वेश्चन था. हाँ बोलिए ना. मैडम ये पैंडेमिक के टाइम पे एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था ऑयल प्राइसेस आर ट्रेडिंग नेगेटिव में, मतलब -$40 में. तो मतलब उसका मतलब क्या हुआ? वो पैंडेमिक में नहीं था, शायद उसके पहले ही हो गया था. क्या हुआ था, वो कमोडिटी का था सिनेरियो, और ये इक्विटी में पॉसिबल नहीं है, कमोडिटी में है. कि कमोडिटी क्या होता है कि कमोडिटी की जब डिलीवरी लेनी होती है, और आप बोलो कि अभी क्रूड ऑयल आपने देखा, अभी क्रूड ऑयल आप कहाँ पे डिलीवरी लेके रखोगे? मुझे एक बात बताइए, एक बार गोल्ड है, सिल्वर है, तो स्टॉक्स भी है तो आप डिलीवरी ले सकते हो, लेकिन क्या क्रूड आप डिलीवरी लेके रख सकते हो? नॉट पॉसिबल. तो फिर आप बोलोगे भाई इसको निकाल, भाई मैं कुछ नहीं जानता. तो सामने वाला फिर बोलता है कि ठीक है, अगर तुमको नहीं चाहिए तो ऐसे करते करते प्राइस पहले 0 गई, फिर बोलते ले तू ऊपर से ले रखने के लिए, ऐसे करके वो नेगेटिव हो गया. तो ऐसा देना भी पड़ता है अगर माइनस नेगेटिव में होगा कमोडिटीज में. इसीलिए क्रूड ऑयल को आजकल मतलब बहुत से ब्रोकर्स लोग क्रूड ऑयल ट्रेड करने नहीं देते हैं कमोडिटीज में, और लास्ट के 2-3 दिन पहले ही ऑटो स्क्वायर ऑफ में डाल देते हैं. ओके मैम. और even in equity, brokers don't allow you to do a carry forward, means trading on the last week. They tell you to square it off intraday only. Okay. Reason is, see, like on Friday, expiry के पहले वीक वाला, उसके पहले वाला फ्राइडे, उसमें है ना 20% मार्जिन हो जाती है. मंडे को 40% मार्जिन हो जाती है. ट्यूसडे को 60% मार्जिन हो जाती है. वेडनेसडे को 80% मार्जिन हो जाती है. थर्सडे को 100% हो जाती है. इसलिए ब्रोकर्स लोग जनरली कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं करते हैं. इज इट क्लियर? ओके मैडम. सो मैडम, ये जो ब्रोकर्स रहेंगे उनको ऑलरेडी एक आइडिया रहेगा कि कितना, मतलब कौन से साइड में प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है? नहीं, उनको इस बात से कोई मतलब भी नहीं है, ना उनको कोई आइडिया है. वो सिर्फ प्रिकॉशनरी पर्पस विथ एक्सचेंज रूल्स है कि इतना मार्जिन लगेगा करके, वो उसी हिसाब से आप पे मार्जिन जो अपने मन से नहीं डालते, जो भी है वो एक्सचेंज से रिटर्न है. ओके. ब्रोकर्स को अगर ऐसी आइडिया हो गई कि मार्केट कौन से साइड जाएगा, तो फिर मुझे तो मजा हो जाएगा ना.
ये आइडिया तो भैया नॉलेज से आ सकती है, वो भी उसके बाद भी स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है. Got Okay, it? madam. Got it. Got it. Yeah. और कोई questions? Vikram sir, any questions? Everything clear. Okay. Shall I proceed to options? Sure, sure. Yeah. Now, first thing, I'll go to options in my way. Options. How do I say what is options? Just a sec. Okay. Okay, when I say options, everyone says it's a call and a put. It's a direction to buy or direction to sell, whatever. I say options means I want to prove myself right. I want to prove myself right. मतलब मैंने जो बोल दिया मतलब बोल दिया. कई लोग व्हाट्सएप पे लिखते हैं ना, एक बार बोल दिया कि मार्केट ऊपर जाएगा मतलब जाएगा, फिर उसके बाद में किसी की नहीं सुनता. दैट इज व्हाट इज ऑप्शंस. एक बार जो बोल दिया मतलब बोल दिया. अब वो होना ही है ये सोच के ऑप्शंस में ट्रेड किया जाता है. इन शॉर्ट आई से Nifty will close on expiry above 14,500. बोल दिया मतलब बोल दिया कि ये 14,500 के ऊपर बंद होगा, मतलब बोल दिया. So this is how people talk in the market. तो उसको हमने नहीं, I mean उसको एक्सचेंज ने एक ट्रेड बना दिया by the name of options. जैसे हम लाइफ में बोलते हैं अच्छा लगी शर्त, यस लगी शर्त. So that is how they say okay, you also do bet. It's a legal betting. So we have converted that shart into option. मार्केट 14,500 के ऊपर बंद होता है तो आई विन, बिकॉज आई सेड ना 14,500 के ऊपर बंद होगा मतलब होगा. एंड अनदर पर्सन सेज नहीं होगा. नहीं होगा, होगा भाई, नहीं होगा. अच्छा चल 100 रुपए की लगी, चल. नाउ आई चेंज माई स्टाइल ऑफ बेटिंग. व्हाट डू आई से? I say, okay, take this 100 rupees, you keep it with you. I don't want this 100 rupees back. But above 14,500, ये कितना भी ऊपर बंद होगा, you will have to return it to me. Up to 14,500, I am not asking a single penny from you. Plus this 100 rupees is for me with you only forever. So up to 14,500, I'm not asking a single penny from you, and you also don't ask me anything more. 100 rupees जो तुमको दिया है वो तुम्हारा हो गया. अब अगर 14,500 के जितना ऊपर एक्सपायरी होगा वो मेरा है. तुम you will give it to me. What say? Agree or not agree? If you agree, we will take a deal. If not agree, we will not take a deal. Okay, you all will ask me what about the running market and all. I'll come to that later. First, let me explain you with the actual meaning why options have been created and how we are trading it. We will come to that later. Okay. So if Nifty closes at 15,000, what will happen?
I make a profit of, I will make profit of 500. वो 100 रुपीज उसको दिया, वो उसका हो गया. And the other person उसका exact इतना loss होगा. But I paid 100 rupees. So my pocket knows that I have made 400 net profit. Market doesn't know I've made 400 only net profit. Only my pocket knows that I've made 400 net profit. मैंने कितना प्रीमियम पे किया, it varies every time. So exchange doesn't know. Exchange को पता है कि मैंने 500 रुपया प्रॉफिट किया है, मेरी पॉकेट को पता है कि I know I've made 400 net profit. तो ये बंदे का कितना लॉस हुआ, उसको 100 रिसीव हुआ था. रिमेम्बर आई गेव हिम 100 रुपीज, इट बिलोंग्स टू यू. सो उसका 400 नेट लॉस हुआ. This is what is options where I have done the betting. Yes. So what is this 14,500 where I was adamant कि 14,500 के ऊपर ही बंद होगा. When I said 14,500 के ऊपर ही बंद होगा, तो मतलब क्या हुआ, I was adamant, मैं जिद पे थी, और मार्केट जब ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा. और ये जो लेवल मैंने बोला था, ये जो प्राइस मैंने बेट की थी, दिस इज नोन एज स्ट्राइक प्राइस. इन ऑप्शंस लैंग्वेज दिस इज नोन एज स्ट्राइक प्राइस. आई हैव फिक्स्ड अ प्राइस कि इसके ऊपर ही बंद होगा. जो 100 रुपीज मैंने उनको दिए थे, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम. In options language, this is known as premium. Spot अभी जो चल रहा है वो कुछ भी हो सकता है. Based on that, premium is decided. But on expiry, if the price is 15,000, so this is known as expiry price. If expires at 15,000, or settlement price, or under spot price, or underlying price. It is known by so many names. These terminologies are very important because we talk this only, we will understand this only. So 15,000 जो expiry price आई है, इस पे expire हुए हैं contracts. What is contract expiring? देखिए, जो शर्त लगी रहती है, जो ट्रेड होता है, this is a deal. It is not a delivery based deal. It is a deal. And deal has to be closed. Deal cannot be kept open forever. Deal का एक certain date होता है, which is on that particular date, that deal, that bet, वो शर्त खत्म हो जाती है. तो हम एक शर्त जो लगाते हैं, हम ये बोलते हैं for 1 month, 1 week, 20 days, 1 year. So we specify that period. That period के according उसका प्रीमियम डिसाइड होता है. If I say now running market today was say 14,222, I say 14,500 के ऊपर बंद होगा, right? And this Thursday month expiry, that is Jan month expiry, Feb month expiry, or March month expiry. Options have, FNO have 3-month contracts, so I can choose any of them except for Nifty options. They have more than 3 years, 5
Generally it is 5 years, but more than 3 years. कहाँ पे आपको लगता है कि 14,500 क्रॉस होने के चांसेस ज्यादा है? ये थर्सडे को? नहीं तो 2 दिन ही तो बचे हैं. जैन एक्सपायरी मे बी, क्योंकि अभी भी 10 दिन तो है हाथ में. फेब एक्सपायरी बहुत ज्यादा चांस है कि 14,500 बंद हो जाए, बिकॉज इट्स मोर देन वन मंथ. मार्च मंथ ऑफ कोर्स और भी प्रोबेबिलिटी है. तो बहुत टाइम है मेरे पास. इतने टाइम में तो प्राइस पहुंच सकता है आराम से. तो टाइम जितना कम रहेगा उतना ही उसका वैल्यू, टाइम जितना कम रहेगा उसका वैल्यू भी कम रहेगा. और टाइम इंक्रीज जितना ज्यादा रहेगा उसका वैल्यू भी ज्यादा रहेगा. किसका वैल्यू? टाइम का. और उसके कारण क्या होगा? प्रीमियम will also be less. यहाँ पे premium will also be less. Premium will also be more. So options में, when you are trading options, time plays a very, very important role, particularly when we are buying options. I have seen a lot of buyers, they buy options and then they wait. क्यों? भाव आएंगे. They never hit a stop loss. Why? There is one more reason. What did I say to you all? When I, यहाँ पे आते हैं, 14,500 की हमने बेट लगाई थी, बदले में 100 रुपया दिया था. It's yours. Take it. The 100 rupees which I paid now, and what did I say? If price expires up to 14,500, don't come to me again and ask me more money. Only if it is above 14,500, I will come to you and ask money from you. मतलब मैं एज अ बायर, मुझे लॉस उतना ही होगा जितना मैंने प्रीमियम पे किया है. और बायर को कौन चाहिए? दोनों जन बोलेंगे मार्केट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो ट्रेड नहीं होगा ना. मार्केट में जो भी ट्रेड्स तभी होते हैं जब एक बोलता है मार्केट ऊपर जाएगा और एक बोलता है मार्केट नीचे जाएगा, तभी तो मार्केट में ट्रेड होता है. इफ बोथ ऑफ देम से कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, देन ट्रेड नहीं होगा. तो एक भाई ने बोला है कि नहीं मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, दूसरे भाई ने बोला मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैंने बोला ऊपर जाएगा. अदर पर्सन सेड नो. तो जिसने ना बोला है ना, उसको प्रॉफिट कितना होगा? सिर्फ प्रीमियम जितना. और मुझे लॉस कितना होगा? सिर्फ प्रीमियम जितना. और लॉस का तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो मेरा प्रॉफिट है वो उसका लॉस है. And that is how the whole option works. This is the basic thing which you should know. I'll take it to you now. So we have index options, we have stock options. Now buyer of the option. Remember, I said 14,500. We said 14,500. Market expecting the market to go up. So buyer of the option is the one who is paying the option premium and buys the right. आपको मैंने एक बात बोला था, एक लाइन बोली थी, if it is at or below 14,500, don't come to me, keep this 100 rupees with you. But if it goes above 14,500, तो जितना ऊपर जाएगा उतना पैसा तुम मुझे देगा. So who has the right? Buyer has the right whether I will take the buyer has the right to
take the profit and say no in losses. Means he is not obliged to exercise his option in loss, and he has the rights in profit. This is the most important thing जो आपको समझना है कि बायर के पास राइट है, सेलर के पास सिर्फ ऑब्लिगेशन है. मतलब प्रॉफिट अनलिमिटेड किसके पास है? बायर के पास. राइटर के पास अनलिमिटेड लॉस है. फिर भी कोई बाय क्यों करता है, फिर भी कोई सेल क्यों करता है? वी विल लुक इनटू दैट. वी स्टिल हैव लॉट्स ऑफ टाइम, मींस 4 more days to go. हम आपको सब सिखा देंगे, डोंट वरी एट ऑल. राइटर ऑफ द ऑप्शन ये वही बंदा है जो इनके अगेंस्ट खड़ा हुआ था बायर के. कौन? ये सेलर. इसको सेलर भी बोलते हैं, राइटर भी बोलते हैं. ज्यादा करके तो शॉर्ट सेलर ही बोलेंगे. राइटर, he receives the premium. You remember I said, आपको एक बात बताया था मैंने, ये ले 100 रुपया और ये आप रखो, मुझे वापस नहीं चाहिए. और जब मुझे 14,500 तक मेरे पास मत आना, उसके ऊपर होगा तो ही मेरे पास आना, और जो लॉस होगा देना. So he receives the premium. I have paid that 100 rupees to him, that premium to him, and thereby he is obliged to now sell and buy the asset. I will explain you tomorrow, not today. Remember, I will explain you tomorrow. He is obliged to sell or buy the asset if this topic I'll cover tomorrow. Because before explaining you what exactly is this, I don't want to enter into that. Now, let us first understand today, then why people are so much interested in trading futures rather than options. What's the difference? हमको तो पता ही नहीं था. बहुत लोग मुझे आके बोलते हैं कि मैडम हमको तो पता ही नहीं था कि फ्यूचर और ऑप्शन के बीच का डिफरेंस क्या है. मतलब हमको सच में नहीं मालूम था. अगर हमको मालूम होता तो हम ऑप्शंस में ट्रेड करते, फ्यूचर्स में नहीं करते, या ऑप्शंस को हम इस ढंग से यूज करते, उस ढंग से यूज नहीं करते, एंड ऑल दैट थिंग. So I will explain you in futures, whether you are a buyer or a seller, you have unlimited loss and profit. If you have short sold and price goes against you, you have loss. If you have, but profit is also unlimited. But in buying the options, the buyer has the right, as I told you, and seller has only obligation. दोनों तरफ एक ही आदमी का नहीं होगा. या तो उसको प्रॉफिट लिमिटेड होगी अगर वो सेलर है तो ऑप्शन का, और या उसको लॉस लिमिटेड होगा अगर वो बायर है तो. बायर को प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकती है, तो सेलर वॉइस नहीं आ रही है मेरी.
यस मैम, बीच में मिस हुआ है। अब आई है मैम। अब आ गई ना, ठीक है। बीच में मिस हो गई थी क्या? जी मैम। 2-3 मिनट नहीं है। कहाँ पे मिस हुई थी वो बता दीजिए मुझे। कहाँ तक आपने सुना था? बायर एंड सेलर ऑब्लिगेशन वाले पॉइंट पे मैम, ये वेरी मार्जिन फर्स्ट नहीं, पॉइंट। मार्जिन सुना था? नहीं, ओके। No, margin is not. Madam, why don't you start? Sorry? Sorry, please come again. Who was saying? Someone was saying. I said the last few minutes now you are off. So we come to the option of buyer of the contract has the right. Yeah, I'm starting the whole slide again. Don't worry. Okay. So the buyer of the option contract, he has only the right. He is not obliged, as I told you. उसका लॉस जो है वो लिमिटेड है. मैम आवाज नहीं आ रही है वापस। लॉस्ट यू अगेन मैम। मैडम यही पॉइंट पे आप बंद हो जाता है आपका, यही पॉइंट पे। आवाज आ रही नहीं है आपकी। Are we on? Yes. Sorry, I lost the connection. Oh. No problem. इसलिए मैं चुप हो गई थी. Don't worry. I lost my connection. Okay. So in futures, you have to pay margin. But when it comes to options, if you are buying an option, the cost is only up to premium. Cost is only up to premium, not more than that. And if you are writing, then only margin is involved in case of options writing options. So this is the biggest thing. Linear payoff and non-linear payoff, again, I will take it tomorrow. Again, I will take it tomorrow because I have not yet done with full options. So unless I do little bit of call and put, then only I can take it. And as I told you, futures have unlimited loss, unlimited profit, and option, one side is limited, another side is unlimited. Either a buyer of the option has limited loss and unlimited profit, that is one side is limited, other side is unlimited, profits are unlimited. And seller has limited profit, that is one side is limited, another side, which is loss, is unlimited. Till here, anyone has any questions? Because we missed on the voice. Yes, friends, anybody has any questions? Yes, friends, any questions? Ma'am, who makes more money, the option seller? Now, who makes more money, the option seller or the option buyer? Sir, actually, both of them make money.
How I will explain you, not a problem, but not today. Maybe in No problem. because everything I cannot take today. It depends on what side of trade you are. If you are buyer, you can make money, but only thing is you should be your view should be right. And if you are a writer, again your view should be right. There is nothing who makes more. In options, it is who is more smart in making money. Because what the Usually problem people say the happens, seller is more smarter, right? yeah, sellers are smarter, but sellers also make a very big loss. I'm telling you. Okay. Why? See, one seller is smart, two sellers are smart, five sellers are smart. Based on that, you also think that sellers are smart, and I start writing the options without understanding which option to write. Only knowing that seller are smart. हाँ भाई, seller का कभी पैसा नहीं लगेगा, and buyer का पैसा लगेगा. Based on that, and buyers what they think, yes, 10 rupees का options लेने का 500 रुपया हो जाता है. So that is the scenario. According to me, if you trade smartly, both can make money. Otherwise, both can be number one losers. Limited loss options can be converted to unlimited loss options. I'm telling you. If you are not knowing the strategies or not knowing the trend, you can make a big mess in options. I've seen people starting with 10,000 of options, buying options and losing lakhs of rupees. I have seen people coming with lakhs of rupees and vanishing away after losing more than the capital. So let me finish this. So there are two types of options. One is call, one is put. Now, what is call? Call is a right to buy. Right to buy. What did I say? I was expecting Nifty to go above 14,500. Matlab teji. So when when do I buy? When I expect the market to be in teji. So I buy call. Buy. When I expect market to be bullish. Put options gives me the right to sell. Though I'm buying a put, not shorting a put. Please remember one thing. People say buy call, sell put. Nahi. It is buy call, buy put. It is not buy call, sell put. It is buy call, buy put. Both are buying. Because buyer of the option only has the right. Seller of the option has only obligation. Please don't forget that. I'm drawing a table. Please keep this table in your mind forever. It's very simple. When I'm expecting market to go up, will I call? When I expect the market to fall, I will buy. Another thing, when I'm expecting the market to fall or not go up, it can be sideways. Then sell or write
call. Mark my words, this is very important. If you're expecting a fall or at least not expecting a rise, मतलब मार्केट अपनी बात हुई थी 14,500 क्रॉस होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो ये जो बंदा है वो बोलता है कि नहीं होगा, so he is writing a call. Same way, if I am expecting a market to go up or at least not fall, ये ध्यान रखना, at least not fall, then I will sell or write put. ये चीज आपको याद होनी ही चाहिए. While trading options, this should be at the back of your mind forever. Without this, don't, if you're not able to understand, don't put your hands in options unless you understand the full logic of options. Yes, friends, any question till here? मैम प्लीज फिर से रिपीट करेंगे. क्या चीज? मैम ये टेबल जो आपने समझाया है पे, हाँ, आपने जो ये अभी टेबल समझाया है वो फिर से रिपीट करेंगे मैम. हाँ, ये टेबल आपको दिखाई दे रहा है ना? यस मैम. अच्छा, तो अभी ऐसा है, मुझे तेज लग रही है, तो क्या करूं? कौन कॉल बाय या पुट बाय? मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम. वॉइस ब्रेक हो रही है. इंडिकेशन इज फुल सिग्नल. 1 second. Now you're clear. अभी भी ब्रेक हो रही है? मैंने कनेक्टिविटी चेंज की है. नो मैम. हाँ, कॉल बाय का मतलब मुझे तेजी लग रहा है. पुट बाय का मतलब, पुट बाय मुझे मंदी लग रही है, डाउनफॉल लग रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन द मार्केट, आई एम बाइंग अ पुट. दिस बोथ इज क्लियर? अनुराधा मैम? यस मैम. Okay. Now, for every buyer, you need a seller. Yes, for every ma'am. buyer, you need a seller. So the seller, what he will think, he will always think the opposite of the buyer. That you remember forever. A seller, Yes, ma'am. or is also known as writer, he will always think the opposite of the buyer. So what he says, his expectation is market will fall or at least not rise. Market will fall और एटलीस्ट नॉट राइज, मतलब निफ्टी जो है वो 14,500 के आसपास घूमते घूमते एक्सपायर हो जाएगी, लेकिन 14,500 के ऊपर नहीं जाएगी, जो हमने एक केस बनाया था उसके अंदर. इज इट क्लियर अनुराधा मैम? Yes, ma'am. And same way, when I'm expecting, suppose Nifty to fall below 14,500, I will buy a put. And you say, no, Nifty will not fall to 14,500. It will not fall below 14,000. Sorry, it will not fall below 14,000. It will go above 14,000 or stay above 14,000, but will not fall below 14,000. So what will you do? You will sell a put, write a put. Is it okay? Yes, ma'am. So this is the basic table. Anybody else have a question?
Anybody else have a question? किसको और नहीं समझा? क्लियर है मैम. सबको क्लियर? This PPT is full continue PPT. I have not broken into days. So don't worry about that. Let it continue. I will be with you. I explain you. So what did I explain you all till now? Option premium, that was 100 rupees if you remember. Expiration date, that can be last Thursday, last week, whatever. Strike price, you remember we did 14,500. Every time it won't be 14,500, it is a price on which we bet. American options. Now we don't have American options, but why I'm explaining you, because initially we had, and globally we still have American options. American options can be exercised any day. Whenever I get profits, I have a right to exercise any day before the expiry. But in European options, I can sell it, but I cannot say to the exchange that I want to book my profits even if there is no seller or no buyer. Still, I cannot tell exchange. I have to wait for the expiry. We have all European options only. तो कोई भी ऑप्शंस में अगर प्रॉफिट आता भी है और सामने कोई बायर नहीं है जिसको मैं सेल कर सकूं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती. उसका सोल्यूशन क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. टाइम वैल्यू मैंने आप लोग को बताया था कि ऑप्शंस के अंदर जितने पीरियड का वो ऑप्शन है, जितना टाइम उस ऑप्शन का है, जो वो टाइम का एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू का वो ऑप्शन होता है. That is how it works. Coming to intrinsic value. Before coming to intrinsic value, this is nseindia.com. Let me open a share. Say, Tata Steel. What happened to NS India now? I'm audible ना? Yes, ma'am. Means everything is okay. Site में कुछ प्रॉब्लम है क्या? चलो रिलायंस आ गया, कोई नहीं, कोई भी एक आना चाहिए था. डोंट वरी, मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आपको अच्छे से दिखाते हैं, उसी के लिए यहाँ लेके आए हैं. This is the underlying price. Can you see this underlying? It is mentioned as underlying. So this is Reliance ka underlying price. Yellow color, all this is known as ITM, that is in the money. White color is out of the money. I'll explain you. This is out of the money.
This is in the money. And what is the price? 1972. So roughly these both can be counted as ATM. Now what are they? In call option, what am I expecting? Spot to go above strike, right? So can I say spot for call option? So can I say spot minus strike is equal to some positive value? In maths, we have only three type of calculations. Spot minus strike is equal to positive. Spot minus strike is equal to same or zero. Spot minus strike is equal to negative. So when we have a positive value, means we are getting the money. When we are getting the money, this is known as we are in the money. When we are getting the money, it is known as we are in the money. And strike minus spot is zero. That means we are at the money. Bhav, cost to cost, we are at the money. And spot minus strike is negative, means we are not making money. We are losing money. Buyer is losing the premium. Buyer is losing the premium. So it is called as out of the money. NSE has made it very clear that yellow color in the money, white color out of the money. I'll take some small shares so that it fits fully. I was working out with so what is the underlying value of Tata Motors? 244. Underlying spot, cash, all are known as stock price, stock price in cash. Expiry or settlement will always happen at spot price or underlying price on last Thursday for stocks, and for Nifty it can be whichever week you have taken. On last Thursday 330 close price of spot or underlying. I hope it is clear now. So Tata Motors underlying price or spot price is 244.40. So can I say this is ATM cost to cost? Now when I say for call it is spot minus strike.
equal to positive. So let us take this example, 225, right? What is spot? 245. Since it is 244.50, I'm taking in round figure as 245. 245 minus, this is a call price which we are taking, okay? This. We are taking this. 225. Can I say 20 rupees in the money? Till here, if anyone has not understood, can ask me again. Friends, if you all have not understood till here, please ask me again. Otherwise, I'll assume that everyone has understood. You can safely assume, ma'am. सर आप तो एक्सपर्ट हो, Small. मुझ में आपको जानती हूँ, आप एक्सपर्ट हो. Small query. Yellow means in the money. Yes, that is defined by a stock exchange. Okay. And white is out of money. Okay. Yes. So, Vikram sir, I know you very well. You have a basic idea of all this. No problem. But यहाँ पे बच्चे लोग और भी हैं जिनको they must be hearing the first time these words. So we have that type of crowd also over here. I have to take everybody at par with me and then move ahead. So 20 rupees is in the money. What is the price of options? Let us say it is showing here 29. So can I say 29 is equal to 20 plus 9? Can I write it in this way? 20 I got it from here. So can I write it as 20 plus 9? Yes. So this 20 is this 20. I'll change the color for you. This 20 is known as in the money. And this 9 rupees is known as time value. This in the money value is also known as intrinsic value. So what is intrinsic value? What is intrinsic value? What is intrinsic value? In the money value is known as intrinsic value. Whatever is in the money value is known as intrinsic value. So I'm taking over here. Where I was. Yeah. So what is intrinsic value? In the money value is intrinsic value, and premium is equal to intrinsic value plus time value. Now, if I see over here,
Anyone wants to take a screenshot can take it. I will send you the recording also, not a problem. But if you all want to take a screenshot, you all can take it. I want to erase all this. Excuse me, ma'am. Yeah. मैम आपने ये जो स्पॉट प्राइस लिया 245, इसमें से हमने 215 या 210 ही 210 माइनस क्यों नहीं किया, मतलब 225 ही क्यों माइनस किया? मैंने एक एग्जांपल लिया मैडम, कोई भी ले लो। मैंने कहा से फॉर एग्जांपल मैंने 225 का स्ट्राइक पकड़ा समझाने के लिए। क्या 215 ले लो, कोई भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Got it, madam? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Now, next example. Let us take for example 260. What is the premium? Premium is somewhere around 9 rupees 65 paisa. What is the spot price? 245 minus 260, which is equal to, can anyone reply this? 245 minus 260? 15. Sorry? 15. Minus 15, ma'am. Vikram sir, what did you say? I said 15. Minus or plus? Minus 245 minus 260 minus 15. Okay. Anybody else? आप ये मत सोचो आप राइट हो कि रॉन्ग हो, क्योंकि अगर आप राइट होते तो यहाँ पे नहीं होते, रॉन्ग हो इसीलिए यहाँ पे हो। तो आप राइट और रॉन्ग ये मत सोचो। It has to be 15 positive. Okay. It will be 0. Why? I can say there is water in the bottle or no water in the bottle. I cannot say there is negative water in the bottle. I have never heard the concept known as negative water in the bottle. I think no one must have heard. They must have heard either water in the bottle or no water in the bottle. Same way, either there is value or there is no value. There cannot be a negative value. Hence, it is written as 0. So, when I'm taking out 9 rupees 60 paisa, then I will write in the money is 0 and whatever is left over is 9.60, which is the time value. Hence, it is totally out of the money option. Any questions? Any questions? Yes, ma'am. So out of the money हमेशा उसका वैल्यू प्रीमियम कम रहेगा इन द मनी से फॉर कॉल ऑप्शन। हाँ, क्योंकि उसमें इन द मनी तो है ही नहीं ना, उसके पास जो है उससे 10 वैल्यू है और जितना दूर का खरीदोगे उतना इसका प्रीमियम कम रहेगा, क्योंकि वहां तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कम रहेगी ना। करेक्ट। Yes. So out of the money,
the time value is 9 rupees 60 paisa, and in the money or intrinsic value will always be 0. If you all want, you all can take a screenshot. I want to erase this. सो मैडम जो सेलर है वो यही टाइम वैल्यू हमारे पास से लेके ले लेगा, करेक्ट? वो अगर खाने वो वहां वो कॉल यही खाना चाहता है, इसीलिए तो राइटर स्मार्ट होता है। वो बोलता है ये पैसा वेस्ट जा रहा है तो मैं इसको खा जाऊं। प्रॉब्लम कब आती है? जब शेयर्स बहुत जोर से भाग जाते हैं, जैसे टाटा मोटर्स है, दिस मंथ इटसेल्फ it moved on from 200 to 250 rupees, 60 rupees, 260, 30% बढ़ गया था ये एक ही महीने में। तो जिसने बहुत दूर का राइट किया था वो एक बार फंस गया था। Got it? मैम और एक डाउट है, पूछ सकता हूँ? और एक डाउट था इसके ऊपर, पूछ सकता? हाँ, और एक डाउट था इसके ऊपर, पूछ सकता हूँ क्या? वो जरा ऑफ द टॉपिक होगा था। क्या है? आप लोग डाउट पूछोगे तो सबका क्लियर होगा, डोंट वरी। ओके मैडम। तो सपोज सेलर ने जो आउट ऑफ द मनी ये बेचा है, ओके, आउट ऑफ द मनी कॉल बेचा है, ओके, जब भी जो प्राइस फ्लक्चुएट होगा तो वो वॉलेटिलिटी पे नजर रखेगा ना, जैसे वो सर अभी मैं एक मिनट, मैं जहां तक पढ़ाई हूँ ना आपको वहां तक आइए, उसके आगे मत जाइए, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। चलेगा, ठीक है, इसीलिए मैं पूछा मैम, और कुछ। हाँ नहीं, मुझे देखो, आप में से ये पूछो, मैं क्वेश्चन पूछूं, मैं हाँ करूंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां तक मैंने पढ़ाया ना वहां पे, अब आपका रिक्वायर्ड टॉपिक को अगर मैंने इग्नोर किया है तो ये मुझसे आप लास्ट में पूछिएगा। आप ये पॉइंट्स नोट डाउन करके रखिए। ठीक है मैडम। जो भी डाउट्स आप लोग को वैसे जो मैं अभी सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ फॉर वट एवर रीजन, बिकॉज आई हैव नॉट रीच टू दैट टॉपिक, यू ऑल प्लीज नोट डाउन योर क्वेश्चंस सो दैट यू ऑल कैन आस्क मी till last day. If I don't means come to that topic, you all can ask me that questions. Okay? ठीक है मैडम। लेकिन वो दिन आप भूल गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। नहीं, मैं नोट करके रखूंगा सब। बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन किसी का? मैडम सी the zero I don't agree because see जब 200 का टाटा मोटर्स था, 220 का out of the money, but this now it's 240, so they cannot say zero, right? So some value is there in that. No, I'm saying in the money value is not there, no? The strike price is out of the money. As of today there's no value, right? Tomorrow immediately can go 30% up also. Yeah, so it will become in the money. हाँ, तो ऐसा नहीं कि zero ही है वो। नहीं, अभी तो जीरो है ना। As of today I can say, yeah, so today it is while talking, if I'm buying this option of 260, it will be known as OTM. I'm buying an option which does not have any in the money. Tomorrow if it reaches to 300 also, it will become in the money. True. ठीक है. But if it goes to 200, then also it will remain out of the money only, no? See, technically the term is known as out of the money and it is called as zero only. Then Tomorrow it's okay. What will happen, that depends on the, when we are talking, when we are discussing, when we are understanding, when we are learning, this is called as zero. It is not called negative. The thing what I'm trying to tell you, intrinsic value can never be negative. Okay, noted, in ma'am. the money, in the money value can never be negative. आप कभी किसी को ये नहीं बोल सकते हो कि 260 का कॉल मैंने बाय किया, उसमें मेरे को पैसा आ रहा है। वो बोलेगा कैसे आ रहा है, प्राइस तो 245 चल रहा है। नहीं, वो तो हम लोग व्यू लेते हैं ना, उसके बाद ही करेंगे। सर वो व्यू इज डिफरेंट, आई एम टॉकिंग ऑफ राइट नाउ विद द वे वी टॉक। Okay, for the way we talk, then I agree with you. So this is the terminology of OTM, ATM, intrinsic value, how it is calculated and all that. Okay, ma'am. Continue, ma'am. Yeah. And 245 is the premium. So 245 is at the money. So again, 245 minus 245 is equal to 0. So it is, because this is same, we'll call it as at the money. And for premium, what we will say, 12
0.25 say is equal to 0 plus 12.25. Highest time value will always be at the money, because the probability of crossing at the money will be highest. So the time value also will be highest at the money. जितना फार आप एट द मनी से जाओगे उतना ही वो आपका प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा. Yesterday on Friday Tata Motors was around 260. That time 250 ka call option was in the money. Aaj Tata Motors came down to 245. So 250 has automatically become out of the money. Suppose tomorrow it falls to 200 by any chance. So all the call options above 200 will become out of the money. Same way, coming to put options. In put option, my view is market will come down, so I can buy put, right? Explanations are always, or the table is always as per the buyer side, seller, because the right lies with the buyer, not with the seller. That is the reason. So buy put. What am I expecting the price to fall? Fall below what? Fall below strike. So the formula becomes strike minus spot. So again we'll come over here. Let's take 260 or let's take 270, whatever you want, just as an example. So 270 minus 245 is equal to 25. So what is the premium over here? Let's say 29. So 29 is equal to 25. इतना तो in the money है ही ना. Strike, I'll write here only, so you all will have an idea. Strike minus spot positive in the money, 0 or same at the money, negative out of the money. And yellow color in NSE India, it is in the money. White color out of the money. इसलिए बहुत अच्छा और सिंपल बनाया NSE India ने. So 29 is the premium. Premium is equal to intrinsic value plus time value. So कितना हो गया time value? 4 rupees. So 25 plus 5. So 4 rupees is time value. That is in this case. So I will write it over here 25 plus 4. And I'll remove this. Spot is 245. So strike minus spot for put option. 245 is 245 minus 245, that is again 0. So whatever 12 rupees or something, whatever it is time value. Let us take 210. Now if I say strike, what is strike? 210. What is spot? 245. So I will say it 0. And what is the premium? 1 rupee 65 paisa. So this is full time value. I will say 0 plus 1.65. This is how the working is taken place. When I'm buying this option or selling this option today, and if I'm asked
आपने कौन सा ऑप्शन ट्रेड किया? आई विल से आउट ऑफ द मनी। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, ये इन द मनी होगा या आउट ऑफ मनी रहेगा मुझे नहीं मालूम। दैट इज द व्यू इज डिफरेंट एंड रीडिंग इज डिफरेंट। व्हाई? जब मैं if I'm expecting Tata Motors to go below 200, then I will buy 210. And if I'm not expecting Tata Motors to fall below 200, I can even short 210. Why? Remember I said when we write put, either we expect the prices to go up or not fall below, or at least not fall below whatever level. So we can write that level also. Till here, any questions, friends? Ma'am, I have a question. Maybe you, if you feel you can answer, please let me know. Ma'am, बोलिए। let's say we have expiry on Thursday. ठीक है मैम? और any spot price or anything on Nifty you selected, और मार्केट, वी आर ऑन मंडे और मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं करता 4-5 दिन पे, तो हमने इन दी मनी आउट ऑफ मनी इंस्टिंक्ट वैल्यू निकाली। उस समय लेट्स से द प्रीमियम इज 50 on Monday, which is carrying instinct value of 40 rupees and 10 as the time value. Okay, ma'am. मुझे ये समझना है मैम, ऑन थर्सडे व्हेन द एक्सपायरी कम्स, वो 10 रुपए तो टाइम वैल्यू के जीरो बनते हैं, ये 40 का भी जीरो कैसे बनता है मैम? आपने कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया? अब चलो लेट अस टॉक दैट वे। इट इज आउट ऑफ लेट्स से 14,700 ले लिया मैम। 14,700 का कॉल। यस, सेल के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं ना मैम? हाँ ओके, ठीक है। अच्छा 14,700। एक मिनट, 14,700 मत लो, आप एक काम करो 14,200 ले लो। यस मैम, 14,200 की पुट कर लेते हैं। 14,200 की पुट ले रहे हो तो 14,300 की पुट ले लो, चलो, क्योंकि 1420। हाँ ठीक है, इसका भाव है समझो से फॉर एग्जाम्पल 70 रुपीज। हाँ जी मैम। लेट्स अज्यूम दैट वे। हाँ अब बोलो, जिसमें लेट अस अज्यूम इट इज 50 and 20। 50 is intrinsic value, 20 is time value। अब बोलो। Now I say the 20 will definitely bring a time value. It will get lapse on Thursday. And if the market is there on 14,300 ही, या 14,300 में प्लस माइनस 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे होती है, तो ये 50 रुपए की मैम वैल्यू कहाँ जाती है? क्यों? क्योंकि वो अभी आपने जब किया था वो इन द मनी था ना। यस मैम। लेकिन जब आपने एक्सपायरी आई तब तक वो आउट ऑफ द मनी हो गया, भाव पर पहुंच गया। सपोज करो अभी स्पॉट जो है वो 14,230 है, अज्यूम करो दैट वे, और 250 है। हाँ 250, लेट्स से 14,250 है। तो वो, अब आप बताओ, अगर मार्केट बढ़ जाएगा तो आपका टाइम ये आउट ऑफ द मनी इन द मनी नहीं हो जाएगा, या एट द मनी नहीं हो जाएगा? यस। तो वहां खत्म हो गई ना आपकी इन द मनी। और अगर मैम ये जब मैंने स्पॉट लिया था 14,250 पे, और मार्केट भी फ्राइडे को 14,250 पे बंद होती है, तो फिर 50 का क्या बनेगा? तो 50 मिलेगा। 20 गया आपका, 50 तो मिलेगा। ओके, वो जीरो नहीं होगा? नहीं, अगर 14,250 पे बंद हुआ तो जीरो कैसे होगा? ओके मैम, पुट की बात कर रही हूँ, पुट की बात कर रही हूँ। हाँ जी मैम, समझ गया मैम। हाँ, इन द मनी जो भी बचेगा, अगर इन द मनी जो भी बचेगा वो आपका रहेगा। ओके, ठीक है अगर मैम, इन द थैंक यू। मनी, अगर आपका व्यू गलत हो गया और इन द मनी खत्म हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। समझ गया, ठीक है मैम, थैंक यू। Yes friends, any other question? Anybody, any other question?
So assuming that everybody has understood. मैम ये जो इन्होंने जो अभी एग्जांपल कहा वो आप कॉल पे भी हमें बता सकते हैं? कॉल पे जो ये एग्जांपल है आपने जैसे पी पे बताया ना वैसे कॉल पे भी हाँ अभी सपोज आपने 14,200 का कॉल खरीदा, ठीक है, 60 रुपीज में, जिसमें 20 इंट्रिंसिक वैल्यू है और 40 टाइम वैल्यू है. लेट्स टेक दिस वे. दिस इज इंट्रिंसिक, दिस इज टाइम वैल्यू. कैन आई से दैट वे? यस मैम, यस मैम. ये 60 रुपीज जीरो कब होंगे? एक्सपायरी पे. एक्सपायरी पे कब? 14,300 पे या 14,200 और बिलो? बिलो. 14,200 or below it will become zero. Even at 14,200 it will become zero. ओके. हमने क्या बात की थी? 14,200 के ऊपर जाएगा. गया क्या? एक्सपायरी 14,200 के ऊपर होगी. हुई क्या? नहीं. अगर मैम अगर 14,210 पे हुई तो 10 रुपए जो रहेगा वो हमें मिलेगा. हाँ मिलेगा. वो हमें क्लियर नहीं करना है, यानी वो रखना ही है. आफ्टर सेटलमेंट वो हमें मिल जाएगा अकाउंट में. वो आपको मिल जाएगा टैक्सेस कट के, अगर कुछ है तो. जो भी अब वो टैक्सेस उससे ज्यादा कटेंगे या कम कटेंगे वो मैं नहीं जानती. ओके मैम. हाँ उसमें टैक्स लगता है, एसटीटी. ओके मैम. हाँ लेकिन अगर मैं एक बार टैक्सेस साइड छोड़ दूं तो बाकी थियोरेटिकल आपको पूरा क्लियर हो गया? हाँ मैम अभी क्लियर हो गया. Any other questions remaining, friends? So I've done in the money, at the money, out of the money. As I told you, there is no margin for buying the options. You only have to pay the premium. For writing, the margin is as per the futures. And what is hedge margin? That I will teach you when we do hedging and we do spreads and options. I will tell you what is hedge margin, which is 30%, not like मतलब जो आपका नॉर्मल लाख रुपया मार्जिन अगर लगता है तो हेज में 30,000 मार्जिन लग सकता है. That depends on the strategy which you have chosen. I will, when we come to strategies, I will explain you that. So daily premium, you have to make the premium as in how you buy, and this is all. One, there is CTM, which I will come to that later. CTM are basically close to money contracts. As I told you in last week, you have to take the delivery of the options. When I say take the delivery of the options means what? And as I told you, buyer has the right, seller is only obliged. So buy call, you get the delivery of shares in your demat account. I'm talking this for stocks only. Index is not yet physical. Buy put, give the delivery, you have to give the delivery of shares to your broker. Sell call, you have to give.
the delivery of shares and sell put give the get the delivery. So now can you give some example? समझ नहीं लगा ये टेबल में. Can you हाँ give मैं us बता रही हूँ ना, हाँ मैं बता रही हूँ सर, बता रही हूँ. आपने 500 की स्ट्राइक का कॉल लिया, से फॉर एग्जाम्पल एट 15 रुपीज, और आपने उसको प्रॉफिट बुक नहीं किया, लेकिन एक्सपायरी के टाइम पे वो 550 हो गया. आप बोले नहीं मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, तो क्या होगा, आपको शेयर्स यू विल गेट डिलीवरी एट व्हाट रेट? 500, not 550. You will get the delivery at 500. आपको ब्रोकर को जो पेमेंट करना है ना, सपोज 1000 का लॉट है, तो 1000 into 500 plus whatever brokerage charges, I'm not taking that into account. तो 5 lakhs का आपको ब्रोकर को पेमेंट करना है अगर 1000 की लॉट है तो, और आपको ये डिलीवरी आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगी, भले ही प्राइस इज एट 550. You have the right to take the shares at 500, and the seller has the right, is obliged, he does not have any right, he is obliged to give you the shares at 500. कुणाल सर, यहाँ पे है ना, अगर सेलर फंस गया तो उसको SLBM का सपोर्ट लेके और वहां पे से शेयर्स उठा के बायर कॉल बायर को देना पड़ेगा. Yes, ma'am. Got it? Yes, ma'am. Yeah. मैडम एक डाउट था. हाँ बोलो राज. हाँ, ये 5 lakhs में मुझे शेयर्स मिलेगा, करेक्ट? तो जो भी प्राइस मतलब शेयर्स है वो, तो मुझे पे करना पड़ेगा 5 lakhs रुपीज. ऑफ कोर्स आपने लास्ट तक डिलीवरी रखी है ना. और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आपने कॉल बाय किया है लेकिन स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, तो आपको डिलीवरी आएगी ना. तो क्या आपको लगता है सिर्फ प्रीमियम के रेट में आ जाएगी? अच्छा चलो इसको ऐसे पकड़ते हैं कि आपने एक फ्लैट खरीदा, उसका टोकन मनी दिया, और फिर बाद में वो फ्लैट आपने खरीद दिया, तो क्या टोकन मनी से पूरा फ्लैट तो नहीं हो जाता ना, अपना पूरा पेमेंट तो करना पड़ेगा ना भैया. ओके गॉट, समझ में आया मैम. Madam, but the cost will be 5,15,000, right? Sorry? The cost will be 5,500 plus 15. So actually 5,15,000 will be my cost. 500? No, that is your pocket knows. That will be what your pocket knows. Exchange doesn't know the cost. Exchange will take, because 15 you have already paid, na? हाँ, but in my doing the when I'm doing my accounts में तो 5,15,000 ही आएगा ना. हाँ, accounts वो आपकी पॉकेट में आएगा. हाँ, but as per the exchange, you are getting the shares at the rate of 500. You have to pay 5 lakhs more, plus whatever brokerage and taxes. That we're not counting currently in the discussion. Yeah, no. Why I'm not counting? Because 15, so you have paid it immediately, na? True. And last day you didn't square off the trade at 45 or 50 rupees. So you have to take the delivery at 500 only. You won't have to take the delivery at 550. Yeah. तो आपको सिर्फ 5 लाख ही देना है, बाकी 15 रुपए तो आपने पहले ही दे दिया. 15 into 1000, that is 15,000. That's gone. For your book's nose, as per your book, it is 515. Got it, Vikram? Yeah. हाँ संतोष.
मैडम ऊपर वो स्लाइड बाय पुट Yeah, ऊपर है ना। because we do. बोलिए विक्रम। Yes, Vikram. See, we do accounting mutual fund, right? There, वैसा सोचा था हमने. Sorry. Come back. I couldn't hear you properly. Vikram, your voice is breaking. Please come back again. See, when we do accounting for the mutual funds, no? So Yeah. I said we do accounts for the mutual funds, right? There, उसके लिए 500 plus 15 will be my cost. हाँ. See, what you are doing. हाँ, वही clarify करने का था कुछ. Yeah, that's okay. Because what the thing is, I teach it this way, as the way we can do it. But everyone has a different purpose for learning this. So I have to go globally, and then I can sort it out on person-to-person basis. हाँ, बोलो संतोष. हाँ. मैडम ऊपर जाइए ना स्लाइड थोड़ा. बोलो. क्या कंफ्यूजन संतोष? नहीं पाइपुल का इधर डिलीवरी. संतोष को अगर कंफ्यूजन होगा तो दुनिया में ऑप्शन किसको आएगा भाई? नहीं मैडम. ओके. नहीं वो थोड़ा सा चेक कर रहा था ऊपर क्या लिखा था. वही बोल रही ना, संतोष को कंफ्यूजन हुआ तो फिर दुनिया में ऑप्शन किसको आएगा? Mr. Santosh, take a screenshot. Na, easier for you to read it later. Okay, sir. वैसे भी मैं ये देने वाली हूँ recording. You can take as many shots you want. Any other question? Yes, ma'am. Raj here. मैम ये आप. हाँ बोलो अनुराधा मैडम. मैम आपने बताया था कि निफ्टी के मतलब निफ्टी का जब आप कॉल बाय करते हो तो उसकी डिलीवरी नहीं ले सकते. नहीं निफ्टी में डिलीवरी नहीं है, वो कैश सेटल्ड है. तो उसमें अगर मतलब प्रॉफिट बुक नहीं करने का ऑप्शन ही नहीं होता है ऐसा? हाँ नहीं, वो ऑटोमेटिक प्रॉफिट आ जाएगा आपके घर में, अगर वो मतलब आपके प्रॉफिट में हुआ तो लेजर में क्रेडिट हो जाएगा. डोंट वरी. उसमें डिलीवरी सिस्टम नहीं है, वो इंडेक्स है ना, इंडेक्स में डिलीवरी नहीं है. राज बोलो. मैडम ये सिचुएशन में मैं अगर सेलर साइड होता था तो मुझे पैसा भरना पड़ता ना? पैसा नहीं भरना पड़ता है, डिलीवरी देनी पड़ती है. ओके. हाँ, पैसा नहीं भरना पड़ता है, पैसा बायर को भरना पड़ता है, सेलर को शेयर देना पड़ता है, पैसा मिलता है. ओके, तो ये सिचुएशन में अगर समझो मेरे पास शेयर्स नहीं रहेगा और मैंने सेल किया रहेगा, ऑप्शन हो जाएगा. फिर कैश, क्योंकि लास्ट डे पे कैश में कन्वर्ट हो गया ना, अभी कैश का जो भी रूल है. ओके. अगर मैं लॉन्ग पुट हो तो आई हैव टू गिव द डिलीवरी, राइट? यस लिखा है ना मैंने. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा ट्रेड करते टाइम एकदम दिमाग में फटक से बैठ जाने का. Madam, my query is, see, at around 325, the value of the put call is, I have shorted the call 0.05 और मैं काट लिया, तो फिर the obligation goes to whom then? No, if you're scared of, then the trade is only खत्म ना. नहीं, जो लॉन्ग साइड तो खड़ा है ना, एक कोई और. हाँ, तो जो खड़ा रहेगा उसको जाएगा, जिसने लास्ट मोमेंट मैंने काट लिया तो मेरा पोजीशन कोई और ले लिया ना 5 पैसे के लिए भी तो. हाँ, तो उसके पास जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? उसको शेयर देना पड़ेगा. नो. ओके. बट 5 पैसे के लिए डू यू थिंक बायर विल टेक द डिलीवरी? No, I mean just just 1-2 rupees. Why I meant. No. 1 second. 1 or 2 rupees also, Vikram sir. If you have touched this topic, let me clear it. Do you think for 1 or 2 rupees also the buyer will take the delivery by paying 5-6 lakhs or 10 lakhs? No, then उसका position क्या हो जाएगा फिर? नहीं, he has an option to choose. All of you all listen very carefully. I was here. We have a line.
Everybody listen, all of you all listen it carefully. I was supposed to take this later on, but since Vikram asked this question to me right now, I will explain you all right now. He has an option of do not exercise. So at 3:30 or around, he will say for all the close to money options where they are only 1 or 2 rupees or something like that. So instead of paying 5 lakhs or something, he will say do not exercise. Tell your broker before 3:30 or so, do not exercise, and it will automatically close the deal. Deal gets cancelled. After expiry, tell your broker at 3:30 he will upload the file saying do not exercise. But this right lies only to the buyer, not to the seller. अगर बायर को ये ऑप्शन नहीं मालूम है तो उसको भुगतना पड़ेगा by taking the delivery. Because seller cannot say do not exercise. He doesn't have the option of not exercising. Got it, Vikram sir? Yes, ma'am. So these are the 5 factors on which options stand, that is spot price or underlying price, strike price, volatility of the underlying price, time to expiration, and interest rate. We'll do it tomorrow because I want to start this afresh. Till here, if you all have any questions, you all can ask me. But this stuff from here, I will start tomorrow. Yes, I'll ask this to everyone. Let me go through. Akash, Mr. Akash Srivastav. Yes, ma'am. Any doubts? Any doubts? No, ma'am. No, ma'am. It's clear, ma'am. Okay. Did the session go well? Yes, ma'am. It was nice. Okay. Thank you. Ankit? Actually, I skipped the first half an hour, ma'am. I will see the recording for that. No problem. I'll try to send it to you by tomorrow 12 o'clock. I'll try my best. Mr. Okay, Ankit? ma'am. Okay. Actually, I joined little late, ma'am. Actually. Okay. But from tomorrow, please be on time at 7:30, everyone, because tomorrow I'll be starting with options calculator and the meaning of delta, theta, gamma, vega, rho. So first part will be I'll be doing Greek. So nobody should be late. Please come by 7:30. Mr. Ankit? Okay, ma'am. Yeah. Mr. Ankit, any doubts? Miss Anuradha madam? No, ma'am. You understood? How was the session? It was good, ma'am. Mr. Gaurav? Mr. Heth? Any doubt? Mr. Kunal? Ma'am, no doubt. No doubt, ma'am. Thank you. The session was very resourceful, ma'am. Yes, ma'am, it was very resourceful. मैंने तो आज से स्टार्ट ही किया है. Yeah. आपको तो आता भी होगा इसमें से सब कुछ. No, ma'am, not much. Mr. Mahesh? Yes. Any doubt? No, ma'am. Thank you. Parimal bhai? Madam, you could take a roll call. Can we leave? Yeah. नहीं madam, no doubts. Everything is Greek to me, but still I'm understanding. Okay, sir. Mr. Pawan? Yeah, Mr. Prakash? Yes, ma'am, it's clear, ma'am. Mr. Raj? No, madam. Mr. Rai? Thanks, ma'am. Fine. Mr. Rajendra Jadhavkar?
No problem, madam. Miss Rekha, Rana ji, Thank you. Santosh, No, ma'am. Sarvesh ji, Saurabh, No, ma'am. No, ma'am. Thank you, ma'am. No doubts. Sunita madam, Vikram sir. Ma'am, everything okay? Tomorrow, me, Kunal, and Santosh, your colleague, will discuss it out. Okay. सर आज कहाँ से डाउट आएगा? आज तो बिल्कुल बेसिक था, बच्चों वाला डे था. कल से इसके लिए हम लोग चुपचाप थे. हाँ, कल से थोड़ा थोड़ा आएगा ना आप लोग को, जब ग्रीक स्टार्ट होगा. मुझे भी सीखना है मैम ग्रीक. संतोष. Okay, friends, take your leave. Thank you, Bye. ma'am. Good Good night. night. Good night, ma'am.